like in first 2 minutes, like I gave too much respect to her, like जब मैं वो stairs चढ़ रही थी ना, you won't believe, like I got a flashback for my whole journey. Welcome back everyone to the Locker Room in the YouTube channel, and with us today we have none other than Priya Sharma, fresh off a road to UFC fight. So Priya, how are you feeling? Where are you? What's going on? First of all, thank you so much, Renjith. And I'm feeling great. बहुत अच्छा लग रहा है. Because it was like a dream come true, and I'm back to training now. That's it. So tell us a bit about like how your whole experience in road to UFC was. Like, you went there, you fought, like you went the complete distance, got a great performance in. So how was the whole experience like? Honestly, मेरा जो experience था ना, it was really great. क्योंकि like UFC is like a biggest stage in the world, right? So मेरा वहाँ पे मतलब जितना भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी जैसे भी था, लाइक वेइंग से लेकर फाइट डे तक, जो भी आई नो कि रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा चाहिए था, बट ऑनेस्टली इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस नाउ कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे और आगे जा सकती हूँ. सो इट वाज लाइक लाइक ये कहते हैं ना कि जैसे कि अभी सिर्फ मतलब शुरुआत ही हुई है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी आगे और भी जा सकती हूँ. So how did the opportunity come to? Like, lot of people might be wondering how the opportunity came to you. And so can you explain on like how this offer came to you and what was your initial reaction of this offer? सो ऑनेस्टली रोड टू एफसी में तो अभी मुझे कुछ पहले बताया भी नहीं था, क्योंकि रोड टू एफसी में फीमेल फाइटर्स इससे पहले नहीं थे. ये वाले सीजन 3 से स्टार्ट हुआ है. तो मुझे जो मेरे मैनेजमेंट टीम है, एलेक्स डेविस करके, सो उन्होंने ही मेरे को बोला था कि we can put you in like Dynamite Contender Series and all. That's why I went to Brazil and all. But when I came back to India, they were like, Ki, there's a little twist. So you're not fighting in Dynamite Contender Series, as they have already started with the female strawweight division in Road to UFC. So my reaction was like, of course, Dynamite Contender Series was also a great deal. But when I get to know that I will be like the first Indian who's gonna be like part of the season 3 strawweight women division. So it was like a great experience because I was at home. मेरे mom dad भी मेरे साथ ही बैठे थे, and I got a call like कि you are fighting in this Road to UFC. So I was very excited. Could you just walk us through the fight that went down? Like, were things going as per your plan, or did your game plan did not work out? Like, what happened during the fight? Okay, so before the fight, when I was training in PI, UFC, we used to do like one workout at least. So when I went to first time in UFC PI, honestly, I was so nervous, like really. But Ashwin, Hoon, and Mohit sir helped me a lot, like with mentally, like emotionally. And then they were there with me. So जो मेरा जो nervousness था ना, वो fight से पहले जो training period था UFC PI में, वो वहाँ से चला गया था. Even during the fight day, oh my god, I can't even tell you कि मुझे ना like कुछ feel ही नहीं हो रहा था. Like honestly, it was a mixed feeling. I was nervous also, but then मुझे बस ये था कि opportunity मिली है, like I have to just do it. So जब शाम को हम लोग fight UFC PI जा रहे थे, and then मेरे को ना like see I talk a lot, okay. मेरे को क्योंकि उसके पीछे भी एक reason है, reason being कि मैं अपने आप को ना push करती हूँ. I laugh, smile, I talk, so that it gives me like energy. जब भी हम लोग अपने एरिया में बैठे थे, like जहाँ पे हम लोग रेड कॉर्नर था, and we were doing a first warm up, can I share, like I was literally nervous, but my coaches know that मैं क्या करती हूँ, मेरा वार्म अप बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है. Like I do like 2-3 warm ups because मेरा जो स्टार्ट है वो I'm little like I take times to start fight, okay. तो मेरा वार्म अप हमेशा हार्ड रहता है. तो लेकिन जैसे ही अश्विन सर और मोहित सर ने मुझे बोला कि प्रिया, आई थिंक यू शुड डू वन वार्म अप राउंड, तो जब मैंने वो पहला वार्म अप राउंड किया ना, तो मेरा जो जितना भी नर्वसनेस था ना, वो चला गया था. उसके बाद लाइक आई वाज सो रिलैक्स. इवन मैं जब केज पे एंटर हो रही थी एंड ऑल दैट, मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी. लाइक आई वाज एंजॉयिंग दैट मोमेंट. एंड देन जब मैं वो स्टेयर्स चढ़ रही थी ना, you won't believe, like I got a flashback for my whole journey. Like I don't know if someone can relate to this, I don't know, but this is my personal feeling, honestly. मेरे को ना वो टाइम पे ना goosebumps हो रहे थे, like how I had started. I never thought I'm gonna be reach here because being a Indian fighter and being a female fighter, you know how it is, right?
before we used to tell people like, we do MMA, we need support and all, but now people still understand. But वो यहाँ तक पहुँचना ही was like बहुत ज्यादा struggle और बहुत fight था यार. और मैं जब स्टेज पे जब मैं चढ़ी ना, तो फिर मैंने अपने आप से बात किया, like just imagine वो मिनट में कितनी चीजें चल रही है. like मेरे को वो स्टेज पे चढ़ रही है, मेरे दिमाग में फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई स्टूपिड मिस्टेक नहीं करनी है. शिट, आई वांट दिस फाइट, आई वांट दिस विन एंड एवरीथिंग. लेकिन जब मैं केज के ऊपर चढ़ी और जब राउंड स्टार्ट हुआ, like तब भी ठीक चल रहा था व्हेन आई स्टार्टेड टू फाइट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी साउथपो के साथ फाइट करी थी. एंड देन मुझे अभी भी लगता है, like in first 2 minutes, like I gave too much respect to her, like like we were, her game plan was, it was already clear, like she wanted to wrestle with me. But then when we started, we were doing exchange because of the reach also. It took me time to understand that level also. Then maybe I like tried hard, but in the first round I got a knee in my like solar plexus, and it was really hard, but I didn't show if you watch a fight. But inside me was like I can't give up, I can't give up, I have to just go forward. So I just survived like little bit. But in the second round I came back, and I tried hard, honestly. So I know that I could have done better, because my style is like to do grappling closer distance very fast, but I don't know what happened to me that day. Yeah, it is not like कोई भी जानबूझ के हारना नहीं चाहता है, कोई भी जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं देना, like पूरा परफॉर्मेंस नहीं देना चाहता है. It just happened. And then in the third round, when she took me down, I just like fast मैंने पूरा मतलब सेव किया अपने आप को, वहां से पोजीशन से निकली. And then I realized like no shit, 30 seconds रह गए और मैं क्या मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं है. तो then I just move forward. मैंने कोशिश किया वो टाइम पे भी, like I fought like till 1 second. लाइक मैं मेरे को था कि अभी भी मेरे पास टाइम है, मतलब मैंने वो टाइम पे भी गिव अप नहीं किया, तो मुझे पता था कि आई ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट. ओके, सो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि व्हाई शी रेज द हैंड एंड एवरीथिंग. सो दिस इज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. ओके, whoever fight, it's also like like challenge for them, for fighters also. तो जब हम वो चीज कंप्लीट करते हैं तो एक रिलीफ भी मिलता है कि like at least I fought till end, I didn't give up. And also that's the reason I raise hand, though I know the result also. But honestly, reaching that level and having that feeling being a MMA fighter, क्योंकि सबका एक ड्रीम रहता है एक बड़े स्टेज में फाइट करना, और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी यार. So what was the discussions after the fight you had with your coaches and the team there in UFC? So after the fight, see honestly, जब मैं वो फाइट करके उतरी and all that, तो मेरे से तब हम लोग उतना बातचीत नहीं हुआ. बट हमें जाते, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने प्रोफेशनल थे कि जैसे फाइट हो, they were like very protective and all. They sent us to a hotel. So when we were drive back to hotel, so me, like my friend Bev Diesel Diva, she was also there, and Ashwin Hoon and Mohit Chawla. We were like talking and all. They was like, it's okay, don't think too much negative and all, just focus on the next one. See, whatever has done. We'll come back stronger, we'll train more harder, and we'll definitely get the win next time. See, it's So not the end of the it's not the end of the life. You though see that 2-3 days, honestly, uh लोग तो कुछ भी बोलेंगे and all that, but जिसके साथ हुआ होता है, जो ऑलरेडी उस केज के अंदर एंटर किया होता है, वो एग्जैक्ट फीलिंग बता सकता है कि बुरा सबको लगता है. मुझे भी लगा, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ है एंड ऑल दैट. मेरे अंदर भी एक हंगर है कि अब जब तक मैं नेक्स्ट विन ना लूं, मुझे भी चैन नहीं मिलेगा. बट देयर इज अ प्रोसेस टू दैट, राइट? तो हर हर प्रोसेस होता है एंड वी हैव टू फॉलो दैट. एंड अभी ऐसा तो है नहीं कि अभी नेक्स्ट डे मैं किसी केज में जाके फाइट करने लग जाऊं और बस जीत जाऊंगी, ऐसा नहीं. आई एम वर्किंग हार्ड, I will come back stronger, and of course my next fight is also coming soon, so we will like discuss later.